Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve the problems of class ninth chemistry chapter atoms and molecules. So here I am going to discuss the NCRT exercise problems from 1 to 6 there. So let's start with the first question. 0.04 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 of boron and 0.144 of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. So students, जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का जो रिलेशन है, लाइक परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ लाइक एनी एलिमेंट इन कंपाउंड का जो एक्सप्रेशन है वो है स्टूडेंट्स, इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड multiplied by 100%. So this is the relation used to calculate the percentage of any element in the compound, or we can say that the percentage composition of the compound by weight. तो मैं सबसे पहले इसको बोरोन के लिए निकालता हूँ. दिस इज अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन. सो सबसे पहले मैं परसेंटेज फॉर बोरोन कैलकुलेट करता हूँ. सो बोरोन का जो मास दे के रखा है, फाउंड जो हमें मिला है बाय द एनालिसिस, दैट इज 0.096 एंड लाइक वी हैव टू डिवाइड मास ऑफ द कंपाउंड, वो है 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो स्टूडेंट्स इसे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास सॉल्व करने पे आएगा 40%. सो इन दिस कंपाउंड द परसेंटेज ऑफ बोरोन इज 40%. देन ऑब्वियसली लाइक टोटल परसेंटेज में अगर 40% बोरोन है तो 60% जो है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहेगा, बट उसे भी आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं. परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन भी यहाँ से निकाला जा सकता है. दैट इज इक्वल टू, लाइक जो ऑक्सीजन का वैल्यू दे के रखा है, उसका अमाउंट दे के रखा है, दैट इज 0.144 and we have to divide this by the total amount, that is 0.24 multiplied by 100%. So obviously ये solve करने पर आपके पास 60% आएगा. So 60% and 40% are the answers for the question number 1. Now let's move to the question number 2 there. So in this question number 2, when 3 gram of carbon is burnt with 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. And what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of combination, chemical combination will govern your answer? सो अगर हम पहले जो हमारे को कंडीशन दे के रखा है उसको देखते हैं. सो वी हैव लाइक 3 ग्राम ऑफ कार्बन. सो इट इज़ 3 ग्राम ऑफ कार्बन and it is being burnt in oxygen, and that is 8 grams. So it is, we can simply write it as C plus O2 and it is given as 8 gram. इसका जो अमाउंट है स्टूडेंट्स 8 ग्राम है. तो दिस रिएक्शन, आफ्टर दिस रिएक्शन लाइक CO2 इज बिंग प्रोड्यूस्ड. सो CO2 का जो अमाउंट हमें मिला है दैट इज 11 ग्राम. सो इट इज़ 11 ग्राम. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो है अपने पास 11 ग्राम. एंड ऑब्वियसली जो मास ऑफ प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो भी है 11 ग्राम. तो इस पहले जो हम इस बात को ऑब्जर्व करें, यहाँ से क्लियरली हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो लॉ जो गवर्न हो रहा है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास. दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इस पहली कंडीशन से जो लॉ हमें दिख रहा है यहाँ पर वो है सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मास की रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद का जो मास है वो कंजर्व्ड है. फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दे के रखा है उसमें है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन है हमारे पास, इज बॉन्ड विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सो लाइक जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो रेशो है कार्बन और ऑक्सीजन का वो है 3:8. लाइक व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वी गेट सम CO2. सो CO2 जो बन रहा है हमारे पास लाइक C+O2 के रिएक्शन से, उसमें जो रेशो है वो है बेसिकली 3:8 का. 3:8 के रेशो में C और O2 है. सो अगर हमारे पास यहाँ पर 50 ग्राम वो दे रहे हैं, लाइक रेशो इज़ 3:8, ऑब्वियसली इसको 3:8 रहना है. लेकिन अब हमारे पास कार्बन स्टिल 3 है, बट हमें ऑक्सीजन जो है वो 50 ग्राम दे के रखा है. तो स्टूडेंट्स CO2 को बनने के लिए ऑब्वियसली हमारे को सिंपली जो है 3:8 की रेशो चाहिए. मतलब वी सिंपली अगेन नीड 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. हमारे पास टोटल 50 ग्राम दे के रखा है, बट हमें सिर्फ 8 चाहिए. सो 50 माइनस 8 यानी कि 42. सो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर अनरिएक्टिव रह जाएगा. दैट इज़ नॉट बिंग रिएक्टेड देयर. सो ये जो सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास, जिसमें कि 42 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगा, आपने 50 ग्राम दिया, स्टिल आपका 3:8 की रेशो में ही रिएक्शन हो पाएगा. तो ये हमें बता रहा है लॉ ऑफ
कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के बारे में दूसरा प्रोसेस हमें जानकारी दे रहा है। सो फर्स्ट प्रोसेस में था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड जो यहाँ पर लॉ गवर्न हो रहा था दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट, और वी कैन से दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की वो 3:8 की रेशो में ही जो है ये रिएक्शन हो पाएगा। 42 ग्राम जो है वो अनयूज्ड हमारे पास रह जाएगा। Now let's come to the third question there. What are polyatomic ions? So students, polyatomic ions क्या है? Polyatomic ion जो है basically it is a group of it is a group of atoms, group of atoms carrying poly means बहुत ज़्यादा. So it is a group of atoms carrying positive or negative charge, carrying positive or negative charge. So that is the meaning of polyatomic ions. So polyatomic ions means which are basically the group of atoms that may carry the positive as well as negative charge. So that is called polyatomic. एग्जाम्पल इसमें हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, नाइट्रेट का एग्जाम्पल है, इट इज सिंपली NO3 नेगेटिव. So here basically group of atoms we have. So similarly we can write for the hydroxide, it is OH negative hydroxide. So इस तरह से हम various examples we can cite there. So ion is basically a group of atoms carrying some positive or negative charge. So let's now come to the next problem there, that is question number 4 there. So students, in this question number 4 we simply have to write the chemical formula for the various examples given in the question. So let's start with the first there. First one is basically magnesium chloride. So magnesium chloride का chemical formula हमें write करना है. सो मैग्नीशियम क्लोराइड का पहले का जो आंसर है वो सिंपली MgCl2, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड. यू कैन ऑल्सो राइट, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा, इट हैज़ बीन रिटन लाइक दैट Mg, and it is like basically Mg2 positive, so it is written as Mg2 positive, and this is chlorine, it is 1 negative. So we have to interchange this, and simply after interchanging the valencies we can write the formula MgCl2. So this is for the magnesium chloride. In similar manner you can also write for other one, this is calcium oxide. So oxide means there is oxygen there, so calcium oxide का जो formula है that is simply CaO. Similarly we can write for the third one, that is copper nitrate. Copper means it's Cu, and the formula for this is CuNO3 twice. So that is copper nitrate, CuNO3 twice. Then we have 4NO3, 2 कहेंगे basically से, that is aluminium chloride, it is simply AlCl3, that is aluminium chloride. Now fourth one is calcium carbonate, calcium carbonate is CaCO3. So these are the chemical formulas in this manner. जैसे मैंने MgCl का राइट किया है वैसे ही आप सभी के लिए भी राइट कर सकते हैं by having their valencies. So it is a CaCO3 is for calcium carbonate. So now let's come to the fifth question, students. Fifth question की तरफ चलते हैं. In the fifth question, like we have been provided with some elements. Give the name of the elements present in the compounds. Basically हमें इनका नाम दे के रखा है, हमें कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो बताने हैं. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक लाइम के साथ. सो क्विक लाइम जो है स्टूडेंट्स, क्विक लाइम है बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज नोन एज द क्विक लाइम. सो इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली कैल्शियम है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है. देन कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड. इसमें जो फॉर्मूला है इसका वो है HBr. सो इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन और साथ में प्रेजेंट है ब्रोमीन. सो दीज आर द elements present in this, hydrogen and bromine are the elements. Now let's come to the baking powder. Baking powder जो है friends वो होता है basically NaHCO3, that is the formula for the baking powder, NaHCO3. So Na is basically the sodium there, H for hydrogen, and then we have other one is carbon, and last one is oxygen. So these are the elements present in this baking powder. Baking powder is NaHCO3, carbon and oxygen as well. Now last one is potassium sulfate, students. Potassium sulfate is basically K2SO4. So K2SO4 में like this is potassium. So ये हमारे पास एक एलिमेंट है यहाँ पर potassium, and other one is sulfur, and last one is oxygen. So these are the elements present in the following compounds: quicklime, hydrogen bromide, baking powder, and potassium sulfate.
लेट्स नाउ कम टू द सिक्स्थ प्रॉब्लम देयर, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस देयर। सबसे पहले है हमारे पास इथाइन। सो इथाइन का जो फॉर्मूला है दैट इज C2H2। सो हम यहाँ पर इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास। सो इट इज़ लाइक C2H2। इसका मोलर मास स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इट इज़ बेसिकली 2 into atomic mass of C there. So it is being written as 2 into 12 for the carbon, and plus this is hydrogen, this is 2 there. So it is 2 multiplied by 1. So after solving this, it is 24 plus 2 is equal to 26 gram. It is in the grams. So molar mass for this C2H2 is 26 grams. Now let's come to the second one there. Second one is sulfur molecule. It is simply S8. This is called sulfur molecule, and sulfur molecule के लिए we simply have to multiply it by 8 with the atomic mass of sulfur, that is basically 32. So 8 into 32 होता है students 256 grams. So 256 gram is the answer. Then let's come to the third one there. थर्ड वन है हमारे पास phosphorus molecule. It is basically P4 molecule. So इसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. It is like 4 multiplied by the 31. So it is 4 into 4, 4 is 12. So it is 124 gram there. Now let's come to the fourth one. Fourth one है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. It is simply HCl. So 1 for H, and chlorine it is like 35.5. So 1 plus 35.5, और ये बन जाएगा हमारे पास 36.5. 1 for H and 35.5 for chlorine. So it is 36.5 gram is the answer for this HCl. Now let's come to the nitric acid. Formula is given there, HNO3. So HNO3 को हम लिखेंगे simply. H के लिए we'll write 1, and for nitrogen we'll write 14 plus it is 3 oxygen. So it can be written as 3 multiplied by 16. So 16 48, and 48 plus 4 is like 52, 62, and it can be written as 63 gram. So these are the answers for the last question there. Calculate the molar mass. So we have to calculate the molar mass in this manner. Thank you very much.